Morning, students of class 3. Students, I'm sure you all are doing well and all of you are fit and fine. Now students, today I'm going to continue with Unit 9 of your English grammar books, Simple Present Tense. So all of you, please take out your English grammar books and turn to page number 37, Unit 9, Simple Present Tense. Students, please take out your grammar books and turn to page number 37, Unit 9, Simple Present Tense. Students, in my last video, I was explaining and writing exercise 2, that is, fill in the blanks with the correct form of the given verbs in the simple present tense, and I had written and explained the first 10 sentences of this exercise. Now today, before I start with the 11th one, let's revise the 10 sentences of exercise 2. Exercise 2, fill in the blanks with the correct form of given verbs in the simple present tense. Beta, each sentence has got a verb in the bracket and we need to fill in the blank with the correct form of the verb. And we need to keep in mind that if the subject is plural, I or you, we need to use the root form of the verb. Whereas if the subject is singular, we need to add es or s to the root form of the verb depending upon the spelling of the verb. So, the first sentence is Sarthak dash in every competition. So, in the blank, students, we will write participates. The word given in the bracket is participate. We need to add s to the root form of the verb. So, the spelling of participates will be P-A-R-T-I-C-I-P-A-T-E-S, participates. Sarthak participates in every competition. Now the second one. We dashed the Children's Day on 14th November. And the verb given in the bracket is celebrate. That is the root form of the verb. Now we need to keep in mind that we is the subject, which is a plural pronoun. So we will write the root form of the verb given in the bracket as it is, that is celebrate. So please write celebrate in the second blank, that is C-E-L-E-B-R-A-T-E, celebrate. Now the third one. Sneha dash milkshake every morning. And the verb given in the bracket is drink, that is the root form. But then we need to keep in mind that Sneha is singular. The subject is singular, so we will add s to the verb given in the bracket drink. So the spelling will be D-R-I-N-K-S, drinks. Sneha drinks milkshake every morning. The fourth one is he dashed bits of paper all over the room. Here the subject is he, which is singular pronoun, and the verb given in the bracket is throw, that is the root form of the verb. As our subject is singular, we will be adding s to the root form of the verb. So, in the blank we will write throws, T-H-R-O-W-S, throws. He throws bits of paper all over the room. Now the fifth one. A tortoise dash very slowly, and the word given in the bracket is move, that is the root form. But a tortoise, that's a singular subject, so we will be adding s to the verb. So in the blank we will write M-O-V-E-S, moves. A tortoise moves very slowly. A tortoise moves very slowly. The sixth one.
the stars dash at night, and in the bracket the word given is twinkle. So we will write the root form of the verb as it is because the subject is plural. Subject beta stars है, stars में s लगा है, plural है, तो हम root form of the verb twinkle as it is लिखेंगे. So we will write twinkle, twinkle. The stars twinkle in the night. The stars twinkle at night. Now 7. Mom dash my uniform, and in the bracket the verb is iron. So as the subject is singular, mom, we are talking about our mother. Mother is singular. So we will be writing irons, irons. We will be adding s to the root form of the verb iron. So mother irons my uniform. Mom irons my uniform. Mom means mother. 8.1. The baby dash loudly, and the verb given in the bracket is cry. Now we need to change the root form of the verb as per its spelling. As the baby is singular, so we will be writing C-R-I-E-S. Students, you need to remember that from cry we need to remove Y and replace it with I-E-S. So the spelling will be C-R-I-E-S. The 9th one. Please turn the page, page number 38, the 9th one. They dash off the light when they go out, and in the bracket, students, the word given is switch. So they, that's the plural subject, so we'll be writing the root form of the verb as it is. So please write switch, S-W-I-T-C-H, switch. Now the 10th one. It is my dog, full stop, it dash with me. Now we're talking about dog, my dog, singular subject. So in the blank we will write plays. The verb given in the bracket is play, that is the root form, but since the subject is singular, so we'll be adding s to play. So the word will be P-L-A-Y-S. So please write plays in the blank. It is my dog, it plays with me. Now students, I'm going to start with the 11th one. Students, the 11th sentence is the earth. Students, always remember that whenever you write earth, E will always be capital. It's a proper noun. Many times in the book also it is misprint. The E of earth is small. You please correct it. Earth, earth's E, S of the sun, they will always remain capital. They all are proper noun. So the earth dash around the sun, and the word given in the bracket is move. Now look at the subject. The subject is the earth. We are talking about the earth, and earth is a planet. और बेटा ये एक ही planet है, इसलिए हम क्या करेंगे, verb के root form में s लगा देंगे. So the verb will be moves. The earth moves round the sun. Earth, the earth बेटा singular subject है, तो हमने verb के root form में क्या लगा दिया, s. So now our sentence will be the earth moves round the sun. And remember, E of earth will always be capital and S of sun will always be capital. So our sentence will be the earth moves around the sun. Earth हमारा बेटा singular subject है, तो हम verb move में क्या हमने add किया, s लगा दिया as per the subject verb agreement. So all of you please write moves, M-O-V-E-S, moves. The earth moves around the sun. Please write first, children. The earth moves around the sun. Done? Now, the next one. That is the 12th one. I
always dash I always dash the truth, and in the bracket, children, the verb given is speak. Okay. Now, look at the sentence carefully. I always dash the truth. Now, children, you need to remember, इसमें subject क्या है बेटा? I. आप always देख के कि इसमें s लगा है, don't get confused. Always is not the subject. ठीक है? Always बेटा सब्जेक्ट नहीं है. सब्जेक्ट क्या है आपका? I है. I सब्जेक्ट है, तो I के साथ, you के साथ हमेशा क्या लगता है बेटा? रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो I always speak the truth. आप सोचोगे ऑलवेज सब्जेक्ट है क्योंकि ऑलवेज में s लगा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे. नहीं, यहाँ पे आपको I को देखना है. जब भी सेंटेंस में बेटा I से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट क्या होगा? I ऑलवेज. अब I के साथ हमेशा क्या लगता है? रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो वी विल राइट द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब as it is. I always speak the truth. Done. Now students, some more examples related to suppose I की जगह बेटा अगर you है, you always speak the truth. याद रखना बेटा, जो भी अगर सब्जेक्ट I हो, you हो, आपको ये सब्जेक्ट को देखना है. तो अगर आपका सब्जेक्ट I हो, you हो, प्लूरल हो, तो हम रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भी यूज करेंगे. Whereas अगर यहाँ पे he हो या she हो, he और she दोनों में से कोई भी एक हो, he ऑब्लिक she, ऑलवेज. अब यहाँ पे अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपके बेटा रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब में क्या लग जाएगा? एस सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ही और शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ. सो यू नीड टू कीप इन माइंड दैट इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ही शी है अगर, तो आपके रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब में बेटा यू नीड टू ऐड एस. वेयरएज आई हो, यू हो सब्जेक्ट, या कोई प्लूरल हो, तो हम रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब विदाउट एस और एस एज इट इज रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आपको लिखते हैं. बट अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, दैट इज ही हो, शी हो, तो आप क्या करोगे बेटा? रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब में आप एस ऐड करोगे. ये आपको याद रखना, एस या ई एस डिपेंडिंग अपॉन दी स्पेलिंग. गॉट इट? सो इफ द सब्जेक्ट इज आई और यू, ये आपको सब्जेक्ट को देखना है बेटा. इनमें से कोई अगर सब्जेक्ट है तो उस हिसाब से आपको वर्ब चेंज करना है. यू, आई एंड प्लूरल्स के साथ क्या लगता है? रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. Whereas if the subject is singular, we add s or es to the root form of the verb. अगर he और she होता तो हम यहाँ पे speak में क्या लगाते बेटा? s. So please keep this in mind. Now, I hope all of you have written, I always speak the truth. So please write the root form of the verb speak as it is. Done? I always speak the truth. Now the 13th one. Iti. Iti is the name of a girl. Iti never dash a lie. And in the bracket, the verb given is tell. Fine. Now, Iti never dash a lie. The subject is Iti. We are talking about one person whose name is Iti. Iti is the name of a girl. And जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा बेटा तो
आप यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे? रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस और ईएस डिपेंडिंग अपॉन द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। तो इति सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेल में क्या लगा देंगे बेटा? एस। इति नेवर टेल्स अ लाई। गॉट इट? आई बात समझ में? आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपने रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या लगा दिया बेटा? एस। सो नाउ आवर सेंटेंसेस, इति नेवर टेल्स अ लाई। गॉट इट? इति नेवर tells a lie. Why we have added s to the root form of the verb? Because our subject is singular. Iti is the name of a person. We are talking about one person. So हमारा जब सब्जेक्ट सिंगुलर है बेटा, तो हमारे रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या लग जाएगा? एस। इति नेवर टेल्स अ लाई. So please write TELLS in the blank. Iti never tells a lie. I hope all of you have done, children. Can I erase it? Now, the 14th one. We dash God. And the verb given in the bracket is worship. Now, we is the subject and we क्या है बेटा? Plural pronoun है ना? We more than one person, तो हम root form of the verb worship as it is लिखेंगे। आपको worship का मतलब पता है ना? worship करना मतलब पूजा करना। पूजा करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? worship करना। तो हम भगवान की पूजा करते हैं कि नहीं? तो पूजा करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? worship. So we worship God. Root form of the verb as it is you have to write. Okay बेटा? अगर I होता तो भी हम root form of the verb ही लिखते बेटा। I worship God. And remember children, G of God will be always written in capital letter. G of God बेटा हमेशा capital letter में ही लिखा जाता है, याद रखना। अगर बेटा U होता तो भी हम वर्शिप ही लिखते, बिकॉज एज पर द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चिल्ड्रन, प्लूरल्स के साथ, आई के साथ, यू के साथ हमेशा रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। वेयरएज अगर इसकी जगह इति होता, सपोज इति है ना, एक बच्चे का नाम, एक लड़की का नाम, नेम ऑफ अ स्टूडेंट, इति वर्शिप्स गॉड। यहाँ पे हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ क्या यूज करते? एस करते। क्यों यूज करते बेटा? बिकॉज इति इज वन सिंगल गर्ल। वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो हमने रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या ऐड किया बेटा? एस ऐड किया। गॉट इट? ये आपको थोड़ा याद रखना है। इति की जगह अगर ही होता बेटा, ही, तो भी हम क्या यूज करते? वर्शिप्स। रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम क्या लगाते बेटा? एस लगाते। तो क्या हो जाता? ही वर्शिप्स गॉड। आपको याद रखना है बेटा, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, आई हो, यू हो, तो आप रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लिखेंगे। वेयरएज अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन, तो आप क्या करोगे? द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस और ईएस डिपेंडिंग अपॉन द स्पेलिंग आप उसको ऐड कर दोगे। गॉट इट? सो प्लीज राइट वर्शिप द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब एज इट इज इन द 14th line. We worship God. I hope all of you have done, children. Okay. Now I'll erase and write the last sentence of this exercise, and that is 15th one. She dash tasty dishes.
verb given in the bracket is make. Now, look at the sentence. She dash tasty dishes. Okay, बेटा. अब यहाँ पे subject क्या है? She. What is the subject, बेटा? She, singular pronoun. तो जब subject singular होता है, तो हम verb के root form में क्या करते हैं? उसमें S लगा देंगे. Make की spelling में लास्ट में E है, तो हम खाली इसमें S ऐड करेंगे. तो our sentence will be she makes tasty dishes. Whereas अगर she की जगह बेटा we होता, अगर we dash tasty dishes ऐसा sentence होता, then what you would have written, children? आप तब we plural pronoun है, तब आप क्या करते बेटा? As it is root form of the verb make लिख देते. Why? Because our subject is plural. यहाँ पे we मतलब more than one and she means one. We are talking about one female. She किसी हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे root form of the verb में आपने क्या ऐड किया बेटा? S ऐड कर दिया. Whereas we क्या है? Plural है, बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे root form of the verb as it is लिखना है. So you need to keep in mind the subject verb agreement. If your subject is singular, हम वर्ब के रूट फॉर्म में एस और एस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐड करते हैं. whereas if the subject is plural I और you, तो हम वर्ब का रूट फॉर्म as it is लिखते हैं. I hope this concept is clear to you now, children. So please write makes in the 15th sentence. She makes tasty dishes. Please write makes, M-A-K-E-S, makes. Now, I hope all of you have done. Now students, we have finished exercise number 2. Now we'll be doing the fun time activity, and this exercise is very important because this exercise will teach you to find the errors. बेटा ये exercise आपको sentence में error मतलब mistakes ढूंढना सिखाएगी, and such type of exercise they keep on coming till class 12. आप class 12 में भी पहुंच जाओगे तो error finding वाली exercise आएगी. You will really enjoy this exercise. Now, the exercise is find the error. Students, error means mistake. What do you mean by error? Mistake. Find the error and correct the words. Find the error and correct the words. Now, in the sentences, there will be an error in each sentence. Now, we need to find the mistake in those sentences and then rewrite the sentence again with the correct word. Though in your book, the space is given, but you write the correct word in the space. But this exercise, all of you, please write this exercise in your English notebook. Please take out your English notebook. You need to know how to write this exercise in the notebook. Book में तो आप खाली word लिख लोगे ना, but then if you write this in your notebook, you will learn it in a better manner. So, all of you please take out your notebooks, children, and we will write this exercise in our English notebook. All of you please take out your English notebooks. Give the heading simple present tense, unit 9, simple present tense. Then write find the error, and remember error means mistake. Error का क्या मतलब होता है? Mistake, गलती. हमें sentence में से बेटा गलती ढूंढनी है और उसकी जगह correct word लिखना है. Got it? Now, our first sentence is cold air blow
in winter season. And there is a blank given in the corner. Now students, the tip of the day for there is the error in the verb only. Beta, there are 10 sentences given and the error is in the verb only. जो verb है बेटा उसी में error है. So we need to look at the verb. Fine. Now, our sentence is cold air blow in winter season. बेटा इसमें verb कौन सा है? जो action हो रहा है वो कौन सा है? Blow. So the error is blow. जो गलती है वो किस में है बेटा? Blow में. Now cold air. Students, air को हमेशा singular माना जाता है. We always consider air as singular. तो बेटा if the subject is singular, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब में क्या लगेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में रूट फॉर्म में एस लगेगा. तो एक्चुअली जो करेक्ट वर्ड है वो क्या होगा? ब्लोस. सो आप ब्लैंक में आप ब्लोस लिख लो. बट द करेक्ट सेंटेंस विल बी, all of you please write the correct sentence. This exercise please do it in your notebook. And in your notebook, don't write the word in the blank. This has to be done in the book only. But in your notebook, you need to write the correct sentence. तो बेटा अब इसका correct sentence क्या हो जाएगा? Cold air. Blow तो गलत है. This was a mistake which we have identified. अब इसकी जगह क्या हो जाएगा बेटा? Blows. Please underline the word which you are changing. So cold air blows in winter season. At the end, full stop. Cold air blows in winter season. ये तो बेटा इनकरेक्ट वर्ड था. इसको हमने आइडेंटिफाई किया, सर्कल बनाया. अब इसको हमने किससे रिप्लेस किया? करेक्ट वर्ड से. और करेक्ट वर्ड क्या है बेटा? ब्लोज. Why we have written blows? Because here the subject is singular. We are talking about cold air, which is air is considered. कभी air को plural नहीं, air का कोई plural नहीं होता. ये uncountable है ना? आप air को count नहीं कर सकते हो. तो जो countable चीजें हैं, uncountable चीजें हैं बेटा, उनका plural नहीं होता. So cold air blows in winter season. Fine. So air uncountable है, तो क्या होगा? सिंगुलर मानेंगे. तो यहाँ पे वर्ब में क्या हो जाएगा बेटा? एस लग जाएगा. सो आवर सेंटेंस विल बी कोल्ड एयर ब्लोज इन विंटर सीजन. प्लीज राइट द सेंटेंस इन योर नोटबुक चिल्ड्रन. एंड आफ्टर राइटिंग द सेंटेंस प्लीज ड्रॉ अ पार्टिंग लाइन विथ अ स्केल एंड पेंसिल. फाइन. नाउ द करेक्ट सेंटेंस इज कोल्ड एयर ब्लोज इन विंटर सीजन. आपको मिस्टेक आइडेंटिफाई करनी है सेंटेंस में. एंड रिमेंबर द मिस्टेक इज ओनली इन दी वर्ड. वर्ड मतलब जो एक्शन हो रहा है, द डूइंग वर्ड. जो एक्शन वर्ड वो उसमें कौन सा है बेटा? ब्लो वर्ब है. और सिंगुलर के साथ रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं यूज होता है. रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या लगता है? एस. सो आवर सेंटेंस विल बी कोल्ड एयर ब्लोज इन विंटर सीजन. Please write this, children, in your English notebook. Please write this, and you need to keep in mind, children, the subject-verb agreement. Fine. If your subject is plural, I or you, आप verb का root form use करेंगे. Whereas if your subject is singular, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर, नाउन हो, प्रोनाउन हो. अगर आप किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हो बेटा, तो आप वर्ब के रूट फॉर्म में एस ई एस ऐड करोगे. और वो एस और ई एस ऐड कैसे करना है आपको स्पेलिंग देख ली है. जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल गो है तो गो में ई एस ऐड होता है, और अगर प्ले है तो प्ले में एस ऐड होता है. Whereas अगर आपका वर्ब क्राई हो, CRY क्राई, then what you will do? तब आप you will remove the Y and replace the Y with IES to
use it with a singular subject. So these things you need to keep in mind. And if you know the subject verb agreement अगर आप करोगे तो बेटा आपको simple present tense में कोई problem नहीं होगी. So I hope students that you have understood. Now the remaining sentences we'll be doing it in the next video. Students, please revise exercise 1 and 2 of unit 9. That's all for today, students. Thank you, students. Have a good day ahead.